हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, हैप्पी वीकेंड। टुडे इज अ सैटरडे। कुछ लोगों के लिए आज का दिन छुट्टी का होता है, कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऑफिस का होता है। जैसे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू ऑफिस, कुछ फ्रेंड्स है जिनका आज छुट्टी है। सो यूजुअली वीकेंड जो है ये हमारे ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो लोग छुट्टी में हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपका एक्चुअली छुट्टी है। So in terms of though it's actually अगर आप passionate हो इसके बारे में like trading, it will never feel like work। तो मैंने जो बोला छुट्टी नहीं है, स्टॉक देखना ही छुट्टी है मेरे लिए। सो ये जो वीकेंड है, ये वीकेंड वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कैनिंग कर लेते हैं और इस ये पूरा वीक का जो प्रिपरेशन है, माइंड सेट प्रिपरेशन, मतलब टेक्निकल साइड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज, इसके चेकिंग के लिए वीकेंड का एनालिसिस, वीकेंड का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So I ask all my learners कि you don't I don't I'm not asking you too much from the weekend, where just we need about 6 to 7 hours between the two weeks, say Saturday, 2 days, sorry, Saturdays and Sundays के बीच में 6 से 7 घंटा चाहिए। एंड नॉर्मल डे अगर इतना हम लोग दे पा रहे हैं, नॉर्मल डे पे हम लोग 2-2.5 घंटा दे तो हो जाए। तो दिस इज तो ये जो आज का डिस्कशन है, आज का डिस्कशन है पिछला जो मैंने स्टार्ट किया था उसी के ऊपर ही, वो है स्टॉक रिजेक्शन। रिजेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको इस पे बिलीव करना होगा। और बिलीव करने के साथ साथ और एक चीज, रिजेक्शन अकेले नहीं है। रिजेक्शन आप कर दिए और वो स्टॉक भाग गया, हम मतलब भाग गया मतलब ये स्टॉक गेव अ ग्रेट रिटर्न किया 20%, 30%, और वो स्टॉक आप देखे थे बट यू डिड नॉट चूज, मींस इज अ कॉन्शियस डिसीजन था, आप इसमें नहीं करेंगे, बट द स्टॉक हैज गॉन। Please understand that in a bull market, there are almost 400, 500 stocks ऊपर जाएंगे, maybe 300 stocks ऊपर जाएंगे। Do you really have the money to invest in all these 300 stocks? Or should you actually do investment in these 300 stocks? जो लोग मेरे लर्नर्स हैं, I'm sure you definitely अगर क्लास किए हैं, you already know the answer. सो दिस इज जो ट्रेडिंग है, ये बेसिकली इसमें फॉरगिवनेस का एक पार्ट है, अदरवाइज रिग्रेट विल सेट यू। हमारे जीतने के लिए वी डोंट नीड हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक, हमें बस 20, 30, 40 अपॉर्चुनिटीज ट्राई करना है, उनमें से 20 सॉलिड अपॉर्चुनिटीज निकालना है, उनमें से फोकस डालना है ऑलमोस्ट 5 to 6, 7, 10 पे, दैट्स इट। सो ज्यादा नहीं चाहिए। And वही चीज स्टॉक्स में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, because rejection and forgiveness, this two has to be there, otherwise आप struggle करोगे। तो वीकेंड में मेरा काम ही है रिजेक्शन कर। एवरी वीक मैं 1000 स्टॉक्स को लेके बैठता हूँ, एंड विद दैट 1000 स्टॉक्स व्हाट आई डू, आई गो टू द वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के हिसाब से, based on weekly chart, what I do, I choose the scanner properly, cash stocks weekly। इसका अभी जरूरत नहीं है, मोर फॉर ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम चेक कर लेंगे, बट जरूरत नहीं, दिस कैंडल इज फाइन। तो इसमें मैं अपना क्राइटेरिया जो आप लोग जानते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, टीएमपी का कोई एक क्राइटेरिया विच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू चूज दैट स्टॉक्स। सो उसके बेसिस पे मैं स्कैनिंग करता हूँ और चार्ट्स को देखता हूँ, साथ में जो अलर्ट बैठाने का जरूरत पड़ता है वो अलर्ट बैठ, अलर्ट लार्जली डेली चार्ट में जाता है, बिकॉज डेली इज मोर सुटेबल फॉर ट्रेडिंग। वीकली के जरिए भी किया जा सकता है, बट ऑलवेज डेली के साथ एक कॉम्बिनेशन रहना बहुत ही अच्छा होगा। कुछ लोग इवेंट डेली, वीकली, मंथली कॉम्बिनेशन में भी करते। टाइम फ्रेम के ऊपर मैं कुछ जबरदस्ती नहीं करता, मैं करता हूँ। This is the weekly scanning I do, and I look for opportunities in daily, but sometimes also looking at the weekly chart, I do take trades. Like if this is candle is too small, I'm get, or this is just from getting a buy signal from a very strong area in weekly chart, very small stop loss.
So then I can go for it. Similar offer tha MCX, but here not in the weekly chart. Here the offer was more on the daily chart. Weekly chart, those offers are more strong. The daily ka bhi strong, MCX is falling, but this is a very strong support. So we can't say just MCX will now fall down. It may be another round of bounce back. So ये जो स्कैनिंग वगैरह है इन द वीकली चार्ट वही मैं करता हूँ फर्स्ट द वीकली बेसिस पे स्कैनिंग चलता है लाइक MCX it's a very green candle means we can enter but it's also a very small candle means less to give important plus white cross is outside that's another one momentum is fading stock speed score not there. So there is enough reason not to go into MCX, but when we go for this kind of trial, we do smaller quantity. So anyway, आज का जो है आज का कुछ अलर्ट आया था आज का जो वीडियो है कुछ स्टॉक्स का अलर्ट आया था और साथ साथ कुछ स्टॉक्स के ऊपर मेरा नजर भी है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग देखते हैं like one is I can clearly say this is one is Sirma या मैं highlight भी किया हूँ Sirma SGS. It is just a comeback story, not a strong stock yet, but I'm closely watching. This is a strong level 546. The stocks may consolidate and take some more time before starts flying, but this has potential. Given the risk, this 477 is will act as a strong support and maximum this area 464 to 477 this price can go down and make kind of a fear create kar sakta hai but yes it is broadly looking like ye agar area protected ho gaya the bounce back will be very strong and this is a full green candle though we don't have a buy alert sometimes we do speculate because risk reward is mainly too good. It is just 500 crossed and just 22. This is nothing. This is just around 4.5, 5%, around 5, or maybe 7% if we go for 65, 5 to 7%, whereas reward can be much bigger compared to this is a very early comeback. So these kind of trades when we are trying out which are not satisfying our criteria, हम लोग एक trial छोटा मोटा position रखते हैं. Otherwise मैं ये criteria के basis पे I choose the stocks and उसमें I prefer these 70 RS status as rising, speeding or extreme bull and stock speed score as greater than 10. I think another stock was Ethos. Ethos Limited. Look at this. This is coming back after a flat consolidation, a comeback story. But RS is bearish. Once again, इसका मतलब हम लोग छोटा quantity इसमें maintain करेंगे. Will not go for anything big. And once this clears up, this is first buying was here, opportunity base was here, main buy signal here. This is also was a breakout. ये जो price है, it sustained above this rainbow level of 2735. So this was a breakout as well as a buy. So this kind of stocks we look for opportunities, and once the RS status say becomes rising, speeding or extreme bull, we add further quantity. Orex stock को देखते हैं. This is not that great, but this is another comeback from a strong level. But it doesn't matter the comeback; it can go for consolidation as well. But this is a very strong support base. इसके ऊपर नजर रखना चाहिए. और नजर रखना मतलब I keep this with alerts. इसमें मैं alert भी इस्तेमाल करूंगा. Short trend मैं और नहीं डालूंगा. It's already placed for me. Short trend bullish 4.1. Abbott India जो signal आ रहा था but ultimately the signal I don't think 1 second.
मैं थोड़ा रॉन्ग टाइम फ्रेम में चला गया था। अबाउट इंडिया का दिस इज 125 मिनट में सिग्नल था। This is nothing. This is not satisfying our criteria. Inox green. Inox green में सिग्नल था। This was the breakout chance था Inox green में 145 का breakout level. So 145 के ऊपर sustain कर रहा है आसानी से। Inox green has some bigger potential to further go up. Then we have Ajmera. अजमेरा का भी सिग्नल आया था और ये सब 21 तारीख को आया था। अजमेरा का ये फायदा नहीं है, ये आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स, मतलब ये आरएस का अलर्ट आ गया बट हम लोग बहुत दूर है। तो इस जगह पे जैसे कोई अलर्ट आके चला गया, मैं क्या करता हूँ, स्टॉक का स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70, नेक्स्ट जो अलर्ट मुझे चाहिए, जब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल गो फॉर दिस वन। ये काइंड ऑफ सिचुएशन में मैं अर्ली बाइंग नहीं करता। Like this is like previous, I was doing some early buying, right? You saw, but here the risk reward is not favorable. This is the base, and here it's a strong resistance line, which I know is not will not be very easy, or actually will be very difficult to break. So it is better to at this point let go and give an alert at this level or above this level. And once it starts to move above 750, it will be better to enter there. Otherwise, this can go up. I'm not saying this will not go up. This can go up, but it will take much longer time and struggle. This is a strong resistance area. तो 21 तारीख स्टॉक के साइड ये सिग्नल आया था। 20 तारीख is here. It is other than this was a beautiful rise. सेरा सैनिटरी वेयर मैंने हाईलाइट किया था। सेरा सैनिटरी वेयर इज ऑसम मूव हो रहा है। यू कैन सी अ ब्यूटीफुल कमबैक सेरा सैनिटरी वेयर एंड आई थिंक इट विल गो अप। ये मैं अपने सोशल मीडिया, ट्विटर या स्टॉकेज, सो ये सब जगह पे या ग्रुप पे कहीं पे हाईलाइट किया था सेरा। आई थिंक व्हाट्सएप में मेरा जो चैनल है, लेट मी चेक, जो व्हाट्सएप चैनल आई हैव शेयर्ड सेरा सैनिटरी वेयर ब्रेक। ये बहुत ही अच्छा मौका था सेरा सैनिटरी वेयर में। अच्छा करेक्शन था और एक्चुअली ये देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल से कम बैक हो रहा है। अब जो ये लेवल्स अब इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेन जो लेवल सेरा सैनिटरी वेयर के लिए आ रहा है दैट इज 9404। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे रुकेगा, इट्स में टेक अ रेस्ट। जैसे हम लोग हाईवे पे रुकते हैं, हाईवे पे थोड़ा खाना खा लेते हैं, थोड़ा वेट रिलैक्स, some people smoke it out and then we'll start again. So this is that place 9400, साथ में 9500 भी है। So interesting area है जहाँ पे एक दिस सेरा सैनिटरी वेयर का मेन अभी करंट टारगेट रहेगा। दिस हैज पास्ट में भी बहुत ही बढ़िया रन दिया एंड इट हैज अ गुड हिस्ट्री ऑफ गिविंग ग्रेट रिटर्न्स। सो सेरा सैनिटरी वेयर में मेरा डेफिनेट फोकस ये भी, और एक इसमें भी I think I have highlighted this one, if not highlighting now. This is another break, MHRIL. However, this one stock is not as great as the last one. If you go to the daily chart, you'll be able to visualize the problem. When it goes up, it tends to give away a lot of correction in between. If you look at the weekly chart, अगर आप वीकली चार्ट को देख रहे हैं, देखिए जब ये ऊपर जा रहा है करेक्शन, ये रेड कैप्स करेक्शन दे रहे हैं, तो ये स्टॉक का टेंडेंसी वैसे अच्छा नहीं है। अदरवाइज दिस इज अ ब्रेक, MHRIL। तो ये इसको देख के इफ आई गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और बेटर वी बी इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज this Aarti industry is more of a daily, it will have to wait for further confirmation.
This is another one, Heranba. बढ़िया signal. This is mainly testing this area. Now, but Heranba जितना अभी तक किया है उससे कई ज्यादा पोटेंशियल है. Obviously, interim resistance भी है कई सारे. But Heranba, I think, has created a formidable base. ये 280 के 5 के आसपास जो formidable base formation हुआ है हिरनबा में, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. अब जरूरी होगा हिरनबा जो मूव किया है, एक तो इस लेवल अब सपोर्ट बन चुका है 355 से लेके अबाउट 49 तक, और हिरनबा इसको ब्रेक करे, थोड़ा कंसोलिडेट डेफिनेटली करेगा एंड इट विल give some pain till 402 and then 439 पास है. So there will be some spikes. ये साथ में एक्सपेक्ट आप करिए. स्पाइक मतलब अचानक से बड़ा फिर थ्रो अवे, दिस विल बी देयर. But ultimately it is 500 and resistance के साथ साथ gradually I think it will continue to break higher with interim correction. ऐसा चार्ट में usually this has been the historical outcome. तो चार्ट के हिसाब से बोल रहे हैं, lot of things can happen. जैसे we are in a recessionary cycle, अगर हम लोग सिग्नल आ गया, it can. जिंदल पॉलीफिल्म्स और एक बढ़िया जो मेरे फोकस में है. This is another breakout, but रुक के जाएगा. ये या फ्लैट लाइन, तो फ्लैट लाइन में रुकेगा, काइंड ऑफ हाईवे पे गाड़ी नहीं बस जा रहा है सोच सकते हैं, तो उतना स्पीड नहीं, बट बस भी अच्छा स्पीड. Ultimate target is where it is. It's 1164. It's where it's heading. So जिंदल पॉली, लेट्स सी इफ इट ब्रेक के बाद सस्टेन कर पाता है कि नहीं. करूर वैसा तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. द बैंकिंग स्टॉक ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, इसको मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम के साथ इसको ऊपर जाना चाहिए, तब जाके मजा आएगा. देन इज कॉस्मोफॉर्स्ट, और एक बढ़िया ब्रेकआउट, सिमिलर स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन हेरनबा, इन जिंदल पॉलीमर, सिमिलर स्ट्रक्चर. देखिए अब ये वेरी लाइकली इज टारगेटिंग दिस एरिया 1042 to 1139. तो यही मैं बोल रहा हूँ, once it is broken, it is sustained. अभी भी स्ट्रगल तो रहेगा ही, स्टॉक थोड़ा थ्रो अवे करेगा, but this is broadly the vision of the structure की reaching the mountain top resistance. अब उसके लिए कहां से ब्रेक हो रहा है वॉल्यूम पे, ये देखिए फ्लैट जोन से ब्रेक हो रहा है, तो इसको थोड़ा एनर्जी चला गया, but not too much of a flat zone. साथ में और एक फ्लैट जोन पास में ही था, that means इससे थोड़ा एनर्जी छीन गया है. Whereas जिंदल पॉलीमर अभी तक which has not broken higher is breaking via a slanting zone. ये एक slanting zone के साथ फ्लैट नहीं, slanting zone के जरिए ब्रेक हो, तो एनर्जी लेके जा रहा है, and very likely 752 and 836, these two are very natural target. Let's see how it goes up. No one can predict the future. That's why stop losses, risk management, all these are there. Stop losses थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा. That's why quantity at this stage will keep it on the smaller side. और भी आते रहते हैं. मैं तो trade based on these alerts are very important for me. This is the Uflex, another stock that is giving the break. So some of the stocks जैसे ही अलर्ट आता है मैं उसमें फोकस्ड हो जाता हूँ, एंड वीकेंड में मेरा काम रहता है कि स्टॉक रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद जो बच गया उसी में मेरा अलर्ट प्लेस. So that is all my work over the weekend on the stock side. And और ऑर्डर प्लेस करना या अलर्ट दोनों कर सकते हैं, अलर्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं. So ऑर्डर या अलर्ट प्लेस करना, और बाकी काम तो है करेंसी, कमोडिटी, मैक्रो. So overall it takes about 6 to 7 hours over the weekend, and on the day I think I'll ask for 2 hours. So that's all friends. Thank you so much for watching this video. अगर आप मेरे कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, you can contact Elan Markets. Elan Markets में मेरे नाम टाइप कर सकते हैं, Shanandu Das, and under there you'll find these courses. These are the courses that you'll find it here.
If you are interested in connecting, you can do. So that's all, friends. Thank you so much, and all the best for your trading. And happy weekend. Don't forget to enjoy.